Good morning, children. How are you? So, in the last class, we have discussed about the plasma membrane, and we studied that plasma membrane is a semi-permeable membrane. It is a lipid bilayer structure. It is made up of lipids and proteins, and we have also seen that the types of movement taking place in plasma membrane. There are two types of movement that is discussed: diffusion and osmosis. Now, today we will see the structure, the bilayer lipid structure of plasma membrane. Children, plasma membrane is made up of lipids. Lipids have two ends. One is water-loving end, which is called hydrophilic end, and the other tail-like structure that you see, it is hydrophilic part, that is called water-hating part. Now, these lipids are arranged here, just you see, in two layers. In such a way that the hydrophobic part is sandwiched between the two hydrophilic parts. And in between these two layers, there are proteins embedded. These are proteins which are embedded between a bilayered lipid structure. Now, you have to know this much only about the details we will be learning in class 11. Let us see the function of plasma membrane. What does this plasma membrane do for a cell? Just like our body, the skin is the outer layer and it gives protection. The same way in a cell, it is the outer layer and it gives protection to the cell. Movement of substance in and out of cell, like gases and water. So it is, we have seen that it is semi-permeable membrane and it allows gases, carbon dioxide, oxygen and all, and water to pass through it. Now it is very flexible also, very thin also, and this flexibility enables the cell to engulf food and other material from surroundings. For example, endocytosis in amoeba. Now just I will explain you what is the meaning of endocytosis. It is a process by which amoeba engulfs its food from the surrounding inside its body with the help of plasma membrane. This plasma membrane is very flexible, and whenever the food particles come near the amoeba cell, then its plasma membrane, it gets depression you will just see, and it will becoming more and more depressed in such a way that it starts engulfing the food. And finally, you see the children and so it is very flexible and it helps in the engulfing of food, and this process is termed as endocytosis. That's all. We will learn about the another membrane, that is cell wall. Cell wall is very specific. It is found only in plant cell, children. You see in the picture, the inner lining, this yellow color lining, is plasma membrane. So plasma membrane is found both in plant as well as animal cells. But outside this plasma membrane, a green layer structure you can see. This is called cell wall. So cell wall is very specific. It is found only in plant cell. It is not found in animal cell. Now it is rigid, covering outside the plasma membrane. So it is present outside the plasma membrane. It is non-living and rigid and fully permeable. Unlike plasma membrane, it is fully permeable. It allows any substance to come and go out of the cell. Now, it is composed of cellulose. It is made up of cellulose. Now, children, you may ask, what is cellulose? Cellulose is again an organic substance, and it is a type of polymer made up of small units, glucose. So, many glucose linked together by glycosidic link to give a polymer of glucose, which is known as cellulose. Details you are not supposed to know, only you have to know what is cellulose. So cellulose are organic substance. It is made up of glucose. Glucose is the unit of cellulose. Several glucose, many glucose linked together in a long chain to form polymer, which is called cellulose. Okay, so this is cell wall. Now, function of cell wall. What does it do? Why we need a cell wall? What it helps in plant cell? Now, children, as we know that if we are having one door, single door in our house, we are getting protected. But if we are having two doors,
one more door outside the main door, then we are overprotected. Now it gives extra protection to the plant cell. It provides structural strength to the plant cell and prevents bursting of cell in hypotonic solution. Children, I have already discussed what is hypotonic. Hypotonic means the solution in which solute particle is less, but the solvent particle is much higher. So solvent particle means water. Water content is very high in hypotonic solution. And in such a solution, if you keep a plant cell, then what will happen? Water enters inside the cell. Now the plasma membrane, the cell will swell up, plasma membrane will get extended. Now it will exert pressure on cell wall and a counter pressure by cell wall is exerted on plasma membrane. Thus it prevents the bursting of cell. That means एक extra wall है जो कि cell को burst करने से बचा देता है. ये extra strength भी देता है plant cell को और bursting से भी बचा देता है. Now children, this is a function. And one more topic, that is what is the difference between cell wall and cell membrane? This is very important. Often this question is being asked in your exams. Cell wall or cell membrane में क्या अंतर है? Cell wall is present only in plant cells, whereas cell membrane is found both in plant as well as animal cells. Cell wall is non-living. It is made up of cellulose. Cell membrane is living and it is made up of lipids and proteins. Cell wall is fully permeable, whereas cell membrane is selectively permeable. It allows only gases and water to pass through it. Cell wall is rigid, highly rigid, considerably rigid, whereas cell membrane is very thin, delicate, and flexible. Now, thank you. And next we will be studying about nucleus. Children, what is nucleus? In any cell we find nucleus. We know that all the cells do not have a proper nucleus. They may have a proper, some of the cells are having a proper nucleus, but there are many cells that do not have a proper nucleus, a defined, well-defined nucleus. However, nucleic material is present, that is nucleic acid is present. So it is generally found in most of the cells. It is spherical or oval in structure and it is found near the center of the cell. This you see here, this is a nucleus of animal cell. It is not exactly at the center, but almost near the center of the cell. And here it is orange yellow structure you can see. This is also nucleus. The nucleus of plant cell. So the nucleus of plant cell is little bit more towards the peripheral region because of the presence of plant vacuoles, which is large in size. We will be discussing about these things later on. But just you know that is what is nucleus. Nucleus is spherical oval structure which is almost present at the center of a cell. It is present in almost all plants of animal cells, except few like bacteria, algae, where we don't find a prominent nucleus, though we find nucleic acid present there. Now, what is the significance of nucleus? Why we do need a nucleus? What is the nucleus doing for a cell? It is a control center of the cell. Just like in our body, brain is the control center. Brain controls all the activity taking place in our body. Same way, the nucleus also is known as control center of the cell. It helps in movement and reproduction. Movement, that means anything which is being moved inside the nucleus to outside the nucleus, that is the cytoplasm, or anything from cytoplasm goes inside. That movement is also controlled by nucleus. And reproduction. Reproduction means in cell theory we have learned a pre-existing cell only give a new cell. That is, any new cell comes only from the pre-existing cell. That is by the cell division. So a cell division gives rise to new cell, and this cell division is controlled by nucleus only. These two functions you should remember.
Now, children, just now I have said that all the cells do not have a prominent nucleus. The cells which do have a prominent nucleus, which contain a prominent nucleus, a well-defined nucleus, they are known as eukaryotic cells. But there are many cells, or few cells you can say, which do not have a proper nucleus or defined nucleus. It lacks nuclear membrane. Such cells are known as prokaryotic cells. For example, bacteria and nuclear algae. Eukaryotic cells, examples of plant cells and animal cells. Now children, अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि नहीं सभी सेल में न्यूक्लियस होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सभी सेल में न्यूक्लियस नहीं होते. बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस का मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट नहीं होता. सेल एक मेम्ब्रेन में एम्बेडेड एनक्लोज नहीं होता है, स्कैटर्ड होता है. जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपकी मम्मी खाना परोसती है तो सपोज वो आपको दाल एक कटोरी में देती है, सब्जी एक कटोरी में और खीर एक कटोरी में, तो सब प्रोमिनेंट है, अलग अलग कटोरे में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है. बट एक ही थाली में अगर दाल सब्जी और खीर सब कुछ वो डाल दे तो वो क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा. आपको समझ ही नहीं आएगा खीर कहाँ है, दाल कहाँ है, सब्जी कहाँ है, ऑल आर गेटिंग मिक्स्ड. तो थोड़ा खीर की मात्रा जहाँ ज्यादा दिखेगी आप कहेंगे हाँ खीर तो है, एग्जैक्टली खीर नहीं है, मिक्स हो गया है दाल सब्जी से, बट खीर है. तो उसी टाइप की बातें होती हैं यहाँ पे सेल में भी. जब कोई भी सेल ऑर्गेनेली अपने एक सेल अपने मेम्ब्रेन में अगर एनक्लोज होता है तो वो एक स्पेसिफाइड हो जाता है. आप एकदम पॉइंट करके कहेंगे हाँ ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये लाइसोसोम है. बट अगर ये सब चीजें अपने सेल मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं होती है तो आपको यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस जैसा है. एग्जैक्टली आप न्यूक्लियस तो नहीं कहोगे, बट न्यूक्लियस वाला कुछ पार्ट यहाँ पर दिख रहा है. तो कुछ ऐसी ही बातें होती हैं eukaryotic and prokaryotic cell. Eukaryotic cell, it is having a well-defined nucleus or nucleus material, nucleic material or nucleic acid is enclosed in a nuclear membrane. और prokaryotic cell में nuclear membrane नहीं होता. So just let us see the differences between eukaryotic and prokaryotic cell. Eukaryotic cell have a well-defined nuclear membrane, whereas prokaryotic cell do not have a well-defined nuclear membrane or do not have nuclear membrane. इसमें न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है, मतलब आप एकदम पॉइंट कर सकते हैं हाँ यही न्यूक्लियस है, यहीं पे न्यूक्लियस है. इट इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, मगर यहाँ पे न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होता, ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में. Cell organelles are present. Almost एक eukaryotic cell में you will find all the cell organelles, whereas in prokaryotic cell many cell organelles are missing, they are absent. Rigid boundary of binuclear membrane contains DNA and protein. जो न्यूक्लियस का मटेरियल है डीएनए एंड प्रोटीन, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मगर यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं होता. दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लियोइड. यहाँ पर हम न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक प्रोमिनेंट स्पेस है जहाँ पर ये प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ये स्कैटर्ड है. तो दैट स्कैटर्ड पार्ट जहाँ पर आपका न्यूक्लिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, दैट एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड. Now example तो मैंने पहले ही बताया, it is most plants and animals are eukaryotic, whereas bacteria and nucleus algae are the example of prokaryotic cell. Now just to see the picture of eukaryotic and prokaryotic cell. ये animal cell है, एक well defined nucleus एक space के अंदर enclosed है, membrane के अंदर enclosed है. All the organelles are prominent, सब दिख रहा है, ठीक है. ये प्लांट सेल है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है, ऑल द ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. बट ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सेल ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं है और जो न्यूक्लियस है इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. आपका न्यूक्लिक एसिड जो है वो स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में और इसका नाम होता है न्यूक्लियोइड. ये है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द structure of nucleus in a eukaryotic cell. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक spherical ball की तरह होता है nucleus, which is generally present at the center of the cytoplasm of a cell.
और इसके आउटर लेयर में मेम्ब्रेन होता है which is known as nuclear membrane, and these nuclear membranes are made up of pores, small pores. Can you see children these pores? ये छोटे छोटे pores होते हैं, they are called nuclear pores. ये nuclear pores होते हैं. और what is the function of these nuclear pores? ये nuclear pore allow करता है जो मटेरियल यहाँ बनते हैं, सपोज यहाँ पर जो राइबोसोम वगैरह जो बन रहा है, अगर कोई मटेरियल को बाहर जाना है that it can go out from these pores, और कुछ मटेरियल को अंदर जाना है that also can go through these pores. So these pores help in the transfer of materials in and out of the nucleus membrane. Nucleoplasm, बेटा प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है that is called न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है that is called न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी आपको एक छोटा सा स्फीयर दिख रहा होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. हम लोग बाद में इसका फंक्शन पढ़ेंगे, अभी आप जान लीजिए इट इज न्यूक्लियो. और फिर आप देख रहे होंगे इन द न्यूक्लियोप्लाज्म दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड क्रोमैटिन. क्रोमैटिन हम कहते हैं द ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म or when the cell is at resting stage, when cell is not ready to divide, but when the cell is preparing itself for the division or ready to get divide or ready for the division, at that time this chromatin change itself into chromosomes. Okay, into chromosomes. क्या होता है, ये छोटे छोटे जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अपने आप को कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके डंबल शेप में और रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को चेंज करते हैं और ये स्ट्रक्चर तक बन जाता है. ये कहलाता है क्रोमोसोम व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड क्या आपको स्ट्रक्चर में चार चीजें जानना है. न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन consists of nuclear pores which helps in transportation. Inside the membrane there is a fluid structure which is called nucleoplasm. Within this nucleoplasm there is another spherical structure which is called nucleolus and something like thin thread-like structures which is known as chromatin. ये चार चीजें आपको स्ट्रक्चर में जानना चाहिए. The next is what is this structures, nuclear membrane, and what is their role. Nuclear membrane, it is a double layer covering of nucleus and it gives protection to the nuclear material. Nuclear pores are the nuclear membrane which allow transfer of materials into outside. Nucleoplasm, it is the fluid enclosed by the nuclear membrane, and nucleolus, ये जो nucleolus है nucleus के center में, it is a structure embedded in nucleoplasm, maybe one, maybe in numbers. किसी किसी सेल में एक ही होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होता है, कभी कभी एक से ज्यादा भी. They are composed of protein and RNA. Ribosome formation takes place here. Ribosome का formation, इसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. याद रखना न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, इट इज द responsible for the formation of ribosome. जब राइबोसोम यहाँ से बनता है then this ribosome goes out of the nucleus in the cytoplasm और वो ये पोर के थ्रू जाता है. ओके, तो ये आपको जानना है. These structures you should know. Now the chromatin और chromosome. Chromatin और chromosome क्या है, कब हम इसको chromatin कहते हैं, कब chromosome कहते हैं. The thin thread-like structures embedded in nucleoplasm, it is called chromatin. और ये chromatin कहलाता है जब सेल resting stage में होता है. When it is not ready to divide, it is in resting stage. It contains DNA, deoxyribonucleic acid. It contains RNA, ribonucleic acid, and it contains nuclear protein. DNA आपका इलेक्ट्रिक DNA है, कभी आप जानते हैं कि बहुत सारा DNA सुना होगा कि भाई मम्मी पापा का DNA बच्चे से मिलता है. अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, सपोज बच्चे को एक हेडेक का प्रॉब्लम है, तो सिरदर्द होती है, तो पता चलता है कभी कभी क्या है उसके पापा को भी ये प्रॉब्लम था, उसके दादाजी को भी ये प्रॉब्लम था.
इनहेरिटेंट कैरेक्टर। जैसे कभी कभी किसी का ग्रे आईज होता है, तो दादाजी का भी ग्रे आईज है, पापा का भी ग्रे आईज है, और बच्चे का भी, तो ये भी एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है। तो बच्चे में बहुत सारे कैरेक्टर अपने पेरेंट्स का होता है, बहुत सारे बच्चों में इवन ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्रॉपर्टीज होता है। DNA is the inherent responsible for inherent character in the offspring. RNA और न्यूक्लियर प्रोटीन का फंक्शन क्या है? जैसे ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, मतलब ये एक्टिविटी को करने के लिए दे आर रिस्पांसिबल। मतलब न्यूक्लियस तभी तक काम करेगा जब आपके पास ये आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन है, लेकिन वो वर्क करने में हेल्प करते हैं, ये एक तरह से न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। Exists during resting stage of cell. तो क्रोमैटिन एक थर्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है तो ये थर्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। उसी समय ये क्रोमैटिन दिखता है, ये क्रोमैटिन अपने आप को क्रोमोसोम में बदल देता है when the cell is prepared for cell division। जब सेल डिवीजन को तैयार होने लगता है तो क्या होता है कि ये क्रोमैटिन जो होते हैं ये अपने आप को पेयर में बांट लेते हैं और कंडेंस कर जाते हैं, थिक हो जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, और ये रॉड स्ट्रक्चर्स अब क्रोमोसोम्स कहलाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। It is formed when chromatin condenses together when the cell is about to divide. It is composed of DNA and nucleic protein and it contains information for inheritance। जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये आपको क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम के डिफरेंसेस हैं जो आपको जानना है। Significance of nucleus जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है शुरू में ही, it is the control center of the cell। सेल के सारे फंक्शंस को ये, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। It helps in movement of राइबोसोम। राइबोसोम जो कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में जब राइबोसोम बनता है तो वो राइबोसोम फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है थ्रू द मूवमेंट थ्रू सम न्यूक्लियर पोर्स। तो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम थ्रू न्यूक्लियर पोर्स from nucleolus to cytoplasm। Cellular reproduction, इसका बहुत बड़ा रोल है at the time of cell division। Chromosome contains in the nucleus play a very crucial role during the cell division। Genes present inside chromosome decide the hereditary character। Chromosomes में छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं which is called genes, और ये genes ही inherent character को carry on करता है। So this much about the nucleus, children। Thank you and thank you all। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में